So how to hold hip bone in anatomical position? First of all, hip bone is also called as innominate bone. नाम नहीं है इसका. क्यों नाम नहीं है? क्योंकि it is actually made up of 3 bones: ilium, ischium and pubis. So unanimously इसका कोई नाम नहीं है. Hip just region है, उसके हिसाब से इसका nomenclature हुआ. That is also it is called as innominate bone. जैसे हम हिंदी में बोलेंगे तो अनामिका. Okay. So it has got certain things to remember. Expanded ilium superiorly, obturator foramen inferiorly, anterior superior iliac spine and pubic tubercle anteriorly, greater sciatic notch posteriorly, symphysis pubis medially, and acetabulum laterally. That determines side of the bone. Okay. Then अभी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं होगा ये सब बोलने के बाद भी. So you have to maintain in certain angulation. What are those angulation? First of all, this should be in same vertical plane. देखो दो एक साथ टच हो रहा है. Which 2 points? Anterior superior iliac spine and pubic tubercle will be in same vertical plane. Then symphysis pubis will be in median plane. Symphysis pubis will be in median plane. तुमने ऐसे पकड़े तो anatomical position नहीं हुआ. It should be median plane. मतलब शर्ट के बटन जो लेवल पे है वो लेवल पे रखना. ठीक है? Symphysis pubis will be in median plane, and this iliac tubercle and this is acetabular notch. Acetabular margin वहाँ पे जहाँ पे टूटा हुआ जैसा दिख रहा है, that is acetabular notch. This acetabular notch and iliac tubercle should be in same vertical line. ये था vertical plane. Same vertical plane. कौन से 2 point? Inguinal ligament के 2 point. Anterior superior iliac spine and pubic tubercle will be same vertical plane. But acetabular notch and iliac tubercle will be same vertical line. तो कितने point हो? वापस देखो. Expanded ilium, fan shape superiorly, obturator foramen inferiorly, anterior superior iliac spine and pubic tubercle anteriorly. इसके साथ ही तुम बोल सकते इन सेम वर्टिकल प्लेन या फिर वो अलग पॉइंट बोलना anteriorly. Then greater sciatic notch is posteriorly, anterior posterior हो गया. Then medial lateral is symphysis pubis medially and acetabulum laterally, which determines side of the bone. Acetabulum जिस साइड में होगा बोन उस साइड. ओके. आफ्टर दैट फाइनल एडजस्टमेंट क्या है? दिस 2 point will be in same vertical plane. This will be in symphysis pubis will be in median plane, and iliac tubercle and acetabular notch in same vertical line. इतने पॉइंट बोलने के बाद कंप्लीट होता है एनाटॉमिकल पोजीशन. जब आगे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है. नाउ यू कम टू ईच एंड एवरीथिंग. फर्स्ट इलियम. Ilium has got certain borders. This border is called as iliac crest. This is anterior border. Anterior border have got. अब जैसे हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं, लाइन इज डिफाइंड बाय 2 locus, AB line, XY line. So कोई भी बॉर्डर जैसे हम हार्ट में बोले थे फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा टू इंफीरियर वेना कावा राइट बॉर्डर. तो बोलने का तरीका रहता है. तो इलियाक क्रेस्ट, ये जो अपर बॉर्डर और इलियाक क्रेस्ट, इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन टू पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन. दिस इज इलियाक क्रेस्ट. Then from anterior superior iliac spine up to acetabular margin, this is anterior border. In anterior border there is anterior superior iliac spine, a small notch, anterior inferior iliac spine, a small notch, and then acetabular margin. Then you have a posterior border. Posterior border is posterior superior iliac spine, then a small notch, then posterior inferior iliac spine, and then greater sciatic notch. So this is forming the posterior border. You have seen iliac crest, anterior border, posterior border.
Now I have an intermediate border. This intermediate border divides ilium into two parts. Anterior two-third. Anterior two-third is smooth. It is called as iliac fossa. Posterior one-third is rough. Okay. So between this smooth and rough, there is an intermediate border. तो स्कैपुला देना पड़ेगा.